Assalamualaikum viewers. Now we will discuss the topic of molecule. Today we will discuss the complete topic of molecule like classification of molecules, basis on of its nature, homoatomic molecule, heteroatomic molecule, and the basis on the basis of size. And inshallah we will discuss the complete topic of molecule. Firstly, we will discuss the definition of molecule, the smallest particle of a pure substance, element or compound which can exist independently is called a molecule. मोलिक्यूल उसे कहते हैं कि किसी भी प्योर सब्सटेंस का एलिमेंट या मोलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकते, आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट कर सके, उसे हम मोलिक्यूल का नाम देते हैं. Now we will discuss the classification of molecules on the basis of its nature. First, homoatomic molecule and second is heteroatomic molecule. Firstly, we will discuss the homoatomic molecule. What is homoatomic molecule? A molecule which is composed of same or one kind of atoms is called homoatomic molecules. Now we discuss the examples O2, O3, N2 and H2. Now we see the O2 and O3 the similar atoms of atoms, similar type of atoms, and similar nitrogen and hydrogen is also similar type of atoms, means similar type of atoms or only one kind of atom is called homoatomic molecules. होमोटॉमिक मोलिक्यूल और हेटेरोटॉमिक मोलिक्यूल दो, इसमें हम इसकी सबसे पहले तो बेसिस की डिस्कस करेंगे कि जो इसके नेचर भी डिस्कस करते हैं कौन कौन सी है मोलिक्यूल की. पहले है होमोटॉमिक, सेकंड है हेटेरो. होमोटॉमिक वो होते हैं जो सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के दरमियान हो या सेम एटम्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है और उनमें जो मोलिक्यूल बनता है उसे हम होमोएटॉमिक मोलिक्यूल कहते हैं. नाउ वी डिस्कस द हेटेरोटॉमिक मोलिक्यूल, a molecule which is composed of different types of atoms is called heteroatomic molecule. Let's discuss the example. CH4, methane and CO2 is carbon dioxide, SO2 and NH3. It's example of heteroatomic molecule. Now we see the example of CH4 means carbon and hydrogen, two different types of atoms. That's why we say that is the example of heteroatomic molecule. जब जो heteroatomic molecule होते हैं वो different types of atoms से मिलके बने होते हैं. जैसे हमने example देखी है CH4 है, CO2 है, इसमें भी आप देखें टू टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, इसमें भी टू टाइप्स हैं, इसमें भी टू टाइप्स ऑफ एटम्स के इन्वॉल्व हैं. इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में टू डिफरेंट टाइप्स के एटम्स इन्वॉल्व हैं, इसकी वजह से हम इसे कहते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल. नाउ वी डिस्कस द एटॉमिसिटी. व्हाट इज एटॉमिसिटी? द नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule is called atomicity. Now let's discuss the examples of atomicity. First is water. Substance is water and its molecule is H2O and its atomicity is 3 because hydrogen is 2 and oxygen is 1 and the total atoms is 3 R3. And second example is ammonia, NH3 and the total atoms is R4, means nitrogen 1 and 3 hydrogens are involved in a molecule that its atoms are 4. अब जब हम एटॉमिसिटी को डिस्कस करते हैं, एटॉमिसिटी होती है कि मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं. जैसे हमने एग्जांपल देखी H2O है, इसमें 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है. ऐसी अमोनिया NH3 है, इसमें 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन. तो टोटल एटम्स की तादाद कितनी होगी? 4 हो गई. And we discuss the atomicity on the basis. The two types of atomicity on the basis, monoatomic and polyatomic molecule. Firstly, we discuss the monoatomic and polyatomic definitions. Molecule which consists only one atom is called monoatomic molecule, and molecule which consists many kind of atoms are called polyatomic molecule. Let us discuss the examples. Helium, neon, argon or total noble gases exist in monoatomic molecule because helium, neon are exist in independently and only just one type of atom, yes, similar atoms.
That's why the examples of monoatomic molecule and the examples of polyatomic molecule is carbon dioxide, carbon monoxide and ozone O3, CO2, two different types of atoms, and CO is also different types of atom, but O3 similar type of atoms, but many atoms are involved in O3, means 3 atoms are involved in O3. That's why is the example of polyatomic molecule. अब जो हम डिस्कस करते हैं एटॉमिसिटी है जो हमारे पास, वो किस पे, उसकी भी आगे 2 हम डिस्कस करते हैं इसके क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट है मोनोटॉमिक एंड दूसरी है हेटेरोटॉमिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जस्ट ओनली 1 एटम मौजूद होता है, जैसे हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, जीनोन है। तो जितने भी नोबल गैसेज हैं सभी के सभी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में हम डिस्कस करते हैं। बस एंड पॉलीएटॉमिक जो मॉलिक्यूल है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स भी होते हैं, या हम ये कह लें एक से ज़्यादा एटम्स अगर मौजूद हैं सेम भी हैं तो फिर भी हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल्स कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO एंड O3 है। एंड वो डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ साइज। First is micromolecules and second is macromolecules. Firstly, we will discuss the examples of there are small in size and exist as monomers. They are large in size and exist in large number of atoms are called macromolecules. Just only they exist in as monomers are called micromolecules. Let's discuss the example of micromolecule is H2O and CO2. It is not a huge number of atoms are involved in H2 and CO2, but hemoglobin and starch, a number of atoms are involved in this molecule. And we discuss the hemoglobin. You clear the concept of this macromolecule. Hemoglobin, it is a blood protein. Each molecule of hemoglobin is made up of 10,000 atoms, means hemoglobin is a huge amount of atoms. Huge atoms are involved in hemoglobin. That's why is the example of macromolecules. It contains carbon, nitrogen, oxygen and iron. Hemoglobin, it contains carbon, nitrogen, oxygen and iron. And hemoglobin is a एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब जो हम ऑन द बेसिस और साइज पे इसके डिस्कस करते हैं कि 2 इसकी टाइप्स हैं आगे, माइक्रो मोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो इतने ज़्यादा ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड नहीं करते, वो जस्ट थोड़े से जो एटम्स मिलते हैं आपस में 3 से 4 में जो मॉलिक्यूल बनता है उसे हम माइक्रो में डिस्कस करते हैं, बट जो ह्यूज अमाउंट होती है जिसमें एटम्स की उससे हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। जैसे हम हीमोग्लोबिन एंड स्टार्च वगैरह हो गया, आपके पास ग्लूकोज वगैरह हो गया, हम इसमें डिस्कस करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स में। अब हीमोग्लोबिन है, इसकी उसने आगे प्रॉपर्टीज़ बताई है। हीमोग्लोबिन कैसा मॉलिक्यूल है? हीमोग्लोबिन है वो ब्लड प्रोटीन कहलाता है और इसमें 10,000 से ज़्यादा एटम्स मौजूद होते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में। और जो मुश्तमिल होता है किन किन एटम्स पर मुश्तमिल होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आयरन पर ये कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है हीमोग्लोबिन। वी हैव कंप्लीट दिस टॉपिक and we will discuss all concept of molecule. Inshallah we will meet in next chapter. Allah Hafiz.